Hello my dear students, welcome in science class and I hope you are ready to start your studies ahead. And today in this video we are going to start chapter 8 and the name of chapter is Reproduction in Animals. What is the meaning of reproduction, beta? We will try to understand the meaning of reproduction in this chapter, and we will also try to understand that how the reproduction process occur in animals. There are how many methods by which animals can reproduce. So all these things we will study in this chapter. So let's start. What is the meaning of reproduction? So as you can see in the name, reproduction. The meaning of reproduction means to produce. Okay, the meaning of reproduction means to produce, and the re means same kind of. So you need to understand that reproduction process only occur in living things. It only happens in living things, and this is a process in which living things produce more of their own kind. They are producing their young ones. They are producing their young ones same their kind of. उन्हीं के जैसे अपने kind of young ones को produce करना, that is called as a reproduction. So what is the meaning of reproduction? To produce same kind. Okay, the process by which living things produce young ones of their own kind. रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो ओनली लिविंग थिंग्स में ही होती है बेटे. किस में होती है? लिविंग थिंग्स में ही होती है. इफ वी विल गिव एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक wall, pen, chair, duster, all these things can reproduce? No. So these things cannot reproduce. Only living things reproduce. जितने भी living things होते हैं वो ही reproduce करते हैं. If we will take examples of living things like frog, fish, plants, housefly, fish, all these things are living things, and these all living things produce. They are having reproduction process. ये सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं इन सब में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, एंड थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही वो अपने जो बेबीज होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं. इफ यू विल सी द बेबीज ऑफ डॉग्स, you what do you call them? You are calling them as a puppy. Okay, and what do you call the baby of cat? Is a kitten. तो कुछ एनिमल्स हैं जो आपकी बुक में भी हैं, आप देख सकते हो. What do we call the baby of lion? Lion, उसको बोलते हैं हम cub. Okay, so how these animals reproduce? ये जितने भी animals होते हैं बेटा ये कैसे reproduce करते हैं? Through the reproduction process. So what do we understand? What do we write in the definition of reproduction? We will write the process by which living things produce young ones of their own kind. Okay, own kind का मतलब होता है अपने same kind of, अपने ही जैसे. अगर हम एग्जाम्पल ले प्लांट्स का, तो प्लांट्स के जो बेबी होंगे, प्लांट्स जो बेबी प्लांट होगा वो भी प्लांट की तरह ही लगेगा. इफ वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ लायन, सो द बेबी लायन विल बी लुकिंग लाइक लायन ओनली, वो लायन के जैसा ही लगेगा. इफ वी विल सी द बेबीज ऑफ हाउस फ्लाई, उसके जो आप एग्स देखोगे, उसका जो बेबी जो उसको नेचुरल बोलते हैं उनको आप देखेंगे, सो दे विल बी लुकिंग लाइक सेम. ओके, इफ यू विल सी द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फर्स्टली ले एग्स विच वी विल स्टडी, तो उसके जो बेबीज होंगे एट लास्ट वो क्या होगा? बिल्कुल मैच्योर होके वो बटरफ्लाई की तरह ही लगेगा, एडल्ट बटरफ्लाई. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इट्स अ प्रोसेस by which all the living things, this happens in living things only, the process by which living things produce young ones. What is the meaning of young ones? Young ones का meaning होता है babies. What is the meaning of young ones? Babies. So the process by which all the living things produce their babies of their own kind, अपने ही जैसे babies को produce करना, that is called as reproduction. Okay, this is a process बेटा having main role. ये बहुत important है on the earth surface, because if the reproduction process would not be there, so the number of animals would not increase on the earth. जो number of animal आप increase देखते हो अर्थ के ऊपर वो नहीं होंगे. Only the sufficient animals would be there. जितने sufficient होते हैं उतने ही रहेंगे. Okay, so reproduction is important to
enhance the continuity of the life on the earth. जो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है कि वो एनिमल्स खत्म ना हो, उनकी जो स्पीसीज हैं वो रिमेनिंग रहे, वो बचे हुए रहे अर्थ पे, आप उनको देखते रहो फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. सो रिप्रोडक्शन इज मस्ट. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज मेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ. लाइफ की कंटिन्यूटी को ये कंटिन्यू रखता है. दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? There are how many methods by which animals can reproduce? So some of the animals are laying eggs and some of the animals are giving birth to their babies. We will take example of birds. If you have seen the birds, what do birds do? Birds क्या करते हैं बेटा? Birds basically lay egg. If we will talk about the insects, insects also lay eggs. If we will talk about the reptiles, reptiles also lay eggs. Reptiles होते हैं crawling animals. So half of the animals and most of the animals we can say that they are laying eggs, and mostly animals are giving birth to their babies, to their young ones. Which animals giving birth to their babies? Like cat, dog, elephant, goat, buffalo, cow. These are the animals which give birth to their babies. And those animals which give birth to their fully developed baby, जो अपने पूरे अच्छे तरीके से डेवलप्ड बेबी को जो बर्थ करते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज मैमल्स. उनको हम बोलते हैं मैमल्स. क्या बोलते हैं? मैमल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैमल्स? एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, और जो अब उनके बेबीज को फीड कराते हैं अपने मिल्क से. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज मैमल्स. ओके चिल्ड्रन, now we will understand about egg laying animals. Egg laying animals कौन से होते हैं बेटा? Can you give me some names of animals which lay eggs? Yes, butterflies, frog, fish, okay, birds. And there are many animals who lay eggs. जो egg laying animal होते हैं, lay eggs करते हैं. So what happens in egg बेटा? How do the baby matures inside the egg? So if you have seen the birds, birds basically lay eggs in the nest. Birds क्या करती है बेटा? Nest में lay करती हैं. And egg needs a warm condition to प्रॉपर मैच्योर. उसको प्रॉपरली मैच्योर होने के लिए, ग्रोन अप होने के लिए इनसाइड द एग, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो होता क्या है, एग जब ले करते हैं बर्ड्स, सो दैट टाइम दे आर नॉट प्रॉपरली मैच्योर. आफ्टर सम टाइम what do birds do? Birds basically sit on the eggs to keep them warm because they need warm condition to be mature. Mature होने के लिए उनको warm condition चाहिए. So birds do incubation process. वो incubation करते हैं, और incubation में क्या होता है? Whenever they sit on the eggs, so the baby inside it properly matures, and the process in which the baby comes out from the egg, that process is called as hatching. उसको हम बोलते हैं hatching. So you need to understand these two things. What is incubation? What is hatching? Incubation क्या होता है? Incubation, the habit of animals, and you can say when birds sits on the egg to keep them warm. The birds sit on eggs to keep them warm. So this is called as incubation. वो होता है आपका incubation. जब birds जो होते हैं वो eggs के ऊपर बैठ के उसको बेटा warm up देते हैं, so that the baby inside it can be fully developed, can be mature, can be grown up. So that process is called as incubation. And what is hatching? When baby bird breaks the egg and comes out, so that is called as hatching. जो बेबी बर्ड होती है वो ब्रेक करती है एग को,
एग को ब्रेक डाउन होता है और उसमें से वो बाहर निकल के आती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? हैचिंग। So incubation and hatching, both of the processes are important for the egg laying animals, because if these two would not be there, so they cannot get their babies. Okay, so incubation is must. If they would not keep them warm, so the baby would not be mature, and if the hatching would not be there, so the baby cannot come outside. Okay, so I hope you have understood. Now children, we will understand about internal structure of an egg. Internal structure of an egg, एग के अंदर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हम उसकी स्टडीज करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज द डायग्राम ऑफ एग। ये एग का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। व्हाट वी आर लुकिंग हियर, द आउटर पार्ट, the outer structure of an egg which is very hard and the color of it is basically white. उसका जो color होता है mostly eggs का white ही होता है। So the white part and the outer part, okay, and this is basically thin hard outer part, this is called as egg shell. इसको हम बोलते हैं क्या? Egg shell. After that you will see a liquid which is present inside the egg, a jelly kind of substance is there, that is called as albumin. उसको हम बोलते हैं albumin. And inside the egg, in the central part, you will see a yellowish part. एक yellow color का part होता है, that is called a yolk. उसको हम बोलते हैं yolk. अब albumin जो होता है बेटा, it basically consists protein in it. It contains protein in it. And yolk में जो आपके nutrients होते हैं वो होते हैं आपके vitamins and minerals, which basically gives nutrient to the embryo for the development. Embryo भी होता है इसमें, inside the embryo is present. In embryo होता है the baby, suppose it's a egg of a bird, so here the baby bird, embryo is a baby bird. And if it's a egg of butterfly, तो butterfly का एक अलग होता है बेटा पूरा metamorphosis, वो हम अभी आपको बताएंगे। ओके, सो द बेबी लिविंग थिंग, जिसका भी ये एग है, उसका जो एम्ब्रियो है, उसका जो बेबी है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी इसको चाहिए, तो ये प्रोटीन कंसिस्ट करता है एल्बुमिन, एंड दिस कंसिस्ट फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, and they are providing these nutrients to the embryo, so the embryo can be developed. And with that, incubation process is also there, which basically parent bird do. Okay, so in this process we can say by which the animal, and what happens after when the baby would mature, then after the hatching process would be there. When baby matures, जब ये baby mature होगा, it would break the egg, egg का breakdown होगा, और mature baby, suppose bird, so the baby bird would come out. Okay, this happens like that. So this is called as life cycle of a animal. ये एक life cycle of animal हो गया। ये हम birds की बात कर रहे थे, तो birds में जो hatching होती है वो इस तरीके से होती है, और incubation के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है। अगर incubation नहीं होगा तो उनका डेवलपमेंट भी नहीं होगा। Now children, I am going to tell you about the insects. Insects also lay eggs. Insects also lay eggs, and we will study now about butterfly. The life cycle of butterfly. Butterfly में basically क्या होता है, हम उसकी study करेंगे. So if you have seen the butterfly, butterfly sucks nectar from the flower, and it lay eggs. Suppose this is adult butterfly. Okay, adult butterfly lay eggs, and it lay eggs on the leaves. ये leaves के ऊपर बेटा there are so many eggs which they lay. When hatching process occur, after hatching from the egg, caterpillar comes out. These are eggs. और जब इनमें हैचिंग प्रोसेस होती है तो उसमें से क्या निकल के आता है, उसमें से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर,
Okay. Now what happens in caterpillar? Caterpillar, which is also on the leaves of the plant. Okay, and it eats the leaves. ये caterpillar जो क्या करता है, वो क्या करता है, वो leaves को eat करता है, and it becomes bigger होता जाता है. After that it covers itself in a cocoon. ये अपने आप को जब ये बिगर हो जाता है तो ये अपने आप को एक लेयर बना लेता है बेटा, एक कोकून, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसमें ये अपने आप को कवर कर लेता है. एंड वेयर इट इज इनएक्टिव, इट डज नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि इस कंडीशन में, इस स्टेज में ये इतना फूड ले लेता है. सो दिस वुड बी इनएक्टिव इन दिस स्टेज. प्यूपा जो स्टेज होती है उसमें ये बिल्कुल इनएक्टिव होता है, इसमें ये कोई वर्क नहीं करता है. एंड आफ्टर सम डेज from the pupa the adult butterfly comes out. इसके अंदर से जो निकल के आती है वो होती है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. उसके अंदर से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बाहर निकल के आती है. So in this way we can understand that this is the life cycle of butterfly, in which firstly the adult butterfly lay eggs on the leaves. When hatching process would be there, so caterpillar comes out. This caterpillar eats the leaves a lot and becomes bigger. इसका जो शेप होता है वो बड़ा हो जाता है. After that it covers itself, ये अपने आप को कवर कर लेता है, and it makes a cocoon. यहाँ पर एक हार्ड शेल, ये आउटर शेल एक कवर कर लेता है और उसके अंदर ये बंद हो जाता है. And for so many days, after so many days, the adult butterfly comes out, and which would be known as adult butterfly. So this is a life cycle of butterfly. ये आपका जो था ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई था. इसमें आपको एक क्वेश्चन भी लर्न करना पड़ेगा, दैट हाउ मेनी स्टेजेस, नेम द स्टेजेस ऑफ लाइफ बटरफ्लाई, जो कि दैट कम्स अकॉर्डिंग टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई. दैट इज एडल्ट बटरफ्लाई, देन एग्स, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा. So here which you need to understand, you have to learn a term that is metamorphosis. यहाँ पर आपको जो term learn करना है that is metamorphosis. Metamorphosis क्या होता है बेटे? It's a process, okay, the process of changing from a young form to an adult form. The process of change, the process of change from a young form to an adult form. ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग थिंग होता है वो एक यंग फॉर्म से, ये इसका यंग फॉर्म है बेटे एडल्ट बटरफ्लाई का, यंग फॉर्म से एक मैच्योर फॉर्म में जो चेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी मेटामॉर्फोसिस कहलाती है. दिस इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस. So I hope till here you have understand, and rest of the chapter we will continue in next video beta. Okay, thank you, bye bye.